Yes, I'm here. Hello everyone. How are you? Just a minute and we will go live with people. Just a second. Yes. Hello everyone. How are you? Today we are doing another live on Dear Zindagi and we'll be discussing a lot many things today. Even with the clips, so we will actually see a lot of movies and movie clips of Dear Zindagi and try to analyze the movie in different perspectives. Just give me a minute and we will soon begin with the session for the day. Again, we will have another person with us who will be there to have that discussion and to carry out that discussion with us. Till then, we will wait patiently and I'll give you a brief about what we are going to do. The live is on Dear Zindagi as it was, last time as well. We will try to see a lot many clips and identify different aspects being portrayed in the movie, through different clips and areas of it. So it is going to be an interactive session, a very interactive session where we will have a lot of insights, a lot of understandings, watching certain clips of Dear Zindagi together. So I hope you look forward to that as well. We will soon have Utkarsh and we will begin with the live with him. So wait for some time, so that he can join in and then we will soon begin with the live. Thank you for being so patient throughout the live in all our past lives and we hope to have it the same way even today and such that we can begin the live very effectively and very nicely. Yes, let's wait for some time. Until then, I'll begin a very small clip on Dear Zindagi, which will have a brief about it, so that we can begin with it in no time. So we'll be playing the clips as well. Just a second. Yes, just 1 second. Yeah. Yes, Utkarsh is going to be with us in no time. You can enjoy the audio till the moment he is joining, and then we will begin with the session. Yeah, I like to groove with the music, and I hope you do too. If you have some things you want to share, do let me know in comments or in the chat box. Let me just. Yes, we have Utkarsh, and I will just add him in the live. Yes, hi Utkarsh. I hope Hi, you Bhavika. see Yes, me as well because I can. we are ready. We are back. Yes, we are. We are. And today it is going to be a very interesting session because we will be watching a lot of clips together as well. So I guess Right? it, And it I'm is very, going to be very a excited. blast. Right? It's going to be a Even me, blast. even It's me, going I to am be the fun. host. Yes. Would you mind giving some, Sure, brief sure, about what we are going to do as well, so that sure. by the time I'll have the clips already on screen as well. Definitely. Definitely. So, I believe the vision and the mission with which we started this series of Sci Cine analysis, it was to make everybody and all the humankind familiar with what are the nuances and details of movie and cinema and how it is being created, articulated, and framed on the first go, and how it is being broadcasted on 70 screen, right? And all our electronic gadgets and OTT screens. And for carrying forward the same, today we are going to be going on live with those particular scenes only and those particular cinema that specific about a specific movie which we have been
carrying forward from the last episode, which is Dear Zindagi. So today we'll be talking about the nuances and the particular scenes which actually resonates on the ground zero level with the human reality, how people take care of their life, and at the same time what are the hustles and challenges they come across, whether you talk about at home or maybe in workplace or maybe just living in their own self zone, right? And how they fight daily every millisecond of their life, being a warrior and being the ultimate achiever of their life to get the containment which they always want to desire for and look forward for attaining in their lives. So आज हम उसी के बारे में अपने इस पर्टिकुलर सीन्स के द्वारा रिलेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, रेजोनेट करेंगे और आप सबके लिए प्रेजेंट करेंगे. Absolutely, absolutely. We will have a very interesting discussion because the whole topic is like the whole movie is very interesting. जो पूरी movie है Dear Zindagi, it has such an important role in each one of our life because somewhere we can relate with it, I guess. Right. It is not just because it's a very nice movie or it is it has a psychology backup with us because it is completely based on that. Not just that, ये movie जो है ये हमारी personal life से बहुत ज़्यादा relatable है. बहुत. We understand the concepts because कहीं ना कहीं हमारे साथ वो चीजें हुई है. The things that we Right. are going through, we have been there and we have had those situations happen with us. And the childhood traumas that people go through, the relationship concerns that people have, that attachment, the fear of abandonment is there. Apart from that, the friendship, the juggle between that, the stigma and prejudices that are aligned with the choices that we have in our lives, with the kinds of people we meet, the kinds of partners we have, जिस तरीके के लोगों के साथ हम उठना बैठना करते हैं, जहाँ हम जाते हैं, जैसे कपड़े हम पहनते हैं, all of it has been discussed in throughout the movie some way or the other. And the fear of stepping up, moving a step forward in the life, facing some of the very tough situations in life, all of these play some Right. important role in our lives, and how we deal with it as well, right? Exactly. Like we'll be basically talking about all the self human dynamics which a human being goes through in every phase of their life. So with the help of these particular scenes shown in the movie, and it's very well written and scripted, I must say, the cinematography being done very precisely, keeping in mind the sensitivity of the particular incidences and relationships and dynamics, if we specifically talk about, keeping in check कि हम अपनी लाइफ में एज अ, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक सिनेमा है, तो समवॉट टू मेक इट मोर एंटरटेनमेंट, टू मेक इट मोर ग्लॉसी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एड ऑन्स हो जाता है, राइट? जस्ट टू मेक इट मोर ड्रामेटिक, अगर मैं एक देसी भाषा में बोलूँ तो मेलो ड्रामेटिक. बट एट द सेम टाइम आपको वो सेंसिटिविटी, आपको वो कनेक्टिविटी, आपको वो रेजोनेंस माइंड में रखना है, because after all, to whom you are showcasing the movie, to whom you are presenting your creation, that is we all human beings, right? जो सिनेमा, जो थिएटर्स में आते हैं, जो अपने मोबाइल स्क्रीन के अदर साइड देखते हैं, वो कौन है? वो हम ही लोग हैं. और Yeah. अगर हम रिलेट करेंगे, अगर हम रेजोनेट कर पाएंगे, अगर हम फील कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली द बॉक्स ऑफिस नंबर्स, monetary part is going to increase in their side, right? With which the mission and the vision is the same. They are always focusing on the emotion, but at the same time their goal is also to earn their livelihood, right? To earn their bread and butter. But हाँ, ब्रेड एंड बटर अगर आप अर्न कर रहे हो ना अपने कोई भी फील्ड या काम से, बट यू हैव टू मेक श्योर आप अपने खुद के ह्यूमन रेस को एडवर्सली अफेक्ट नहीं करो. अगर आप इम्पैक्ट ही लाना चाहते हो ना, आइदर डू नथिंग, लाइक एज इन लाइक बी पोकर अबाउट द इफेक्ट, और bring a positive impact in your own society, in your own human kind community. So which Yeah. this movie has very well presented and directed and written. And here we are, that आज हम सारे
इसके लिट्ठे चिक्के हम एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे. Bilkul, bilkul, absolutely. And just a moment, I will just share the link with, people so that they all Right, can take the benefit and join in the link and watch us have this beautiful discussion along with the movie descriptions. right. So just give me a second so that I Sure, can just sure. sign the live discussions. Sure. So till the time you are doing this, just wanted to say to people that डियर जिंदगी एक ऐसी मूवी है जहाँ पे irrespective की यहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट है that is a female character, कायरा played by आलिया भट्ट, but at the same time जो happening जो उसकी लाइफ में दिखाया गया है, it is somewhat very generalized, keeping in check कि it happens with male fraternity also, it happens with female fraternity also, and how a person take the charge of their life at every stage, not keeping in check कि यार एक जब कुछ मिस हैपनिंग होती है, जब भी आप अवेकन हो, और जब भी आप मूव फॉरवर्ड करो विद टेकिंग चार्ज ऑफ योरसेल्फ or your life. It's about every phase, whether you talk about childhood, whether you talk about adolescent, whether you talk about early adulthood, middle or late adulthood. You have to be the owner and the orator and the creator of your own life. ठीक है? Yes. You have to keep this in mind. And अगर उसके लिए आपको मेडिकल हेल्प या मेंटल हेल्थ हेल्प की जरूरत है, don't hesitate. I am loudly saying again and again, don't hesitate at all to approach mental health professionals, psychotherapists or medical doctors, if because at the end your life is what you are going to live till the end of your journey, right? Till your last breath is your human life. अगर आप अपनी जिंदगी का डोर अपने हाथ में ले लोगे ना, तो आप अपने हेल्थ और वेलबींग का तो ध्यान रखोगे ही, बट आपके थॉट इमोशन, आप क्या इवेंट और हैपनिंग हो रही है एवरी डे ऑफ योर लाइफ, एवरी मिली सेकेंड ऑफ योर लाइफ, यू विल बी प्राउडली थिंक कि यार ये जिंदगी मैंने खुद के दम पे बनाई है, और इसका चार्ज और इसका ओरेटर, इसका जो लाइक अल्टीमेट हेड है इस एटलीस्ट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, वो मैं हूँ. Ultimately, obviously, what is going to happen is written by Almighty, the spiritual higher energy. That is going to happen. But at least आपके पास ये तो अथॉरिटी है ना इस अर्थ पे, इस जिंदगी में, कि आप खुद अपनी लाइफ को बैलेंस और सेटल तरीके से जी पाओ. ये तो आप ये तो आपको पता है, और ये भगवान ने भी आपको अथॉरिटी दे रखी है, फुल फ्रीडम दे रखी है. यू हैव टू लिव योर लाइफ विथ लव, लिबर्टी, काइंडनेस, generosity, and just not towards yourself. Obviously, self se to start ho gayi, but towards your own human people around. Not only humans, it's even with animals, it is even with plants, because obviously it's all the ecosystem, right? आप बैलेंस अगर खुद के अंदर ले आओगे, क्योंकि इकोसिस्टम अंदर भी होता है, सेल्फ विद इन भी होता है, और वो इकोसिस्टम बाहर भी रेजोनेट होगा. अगर आप खुद के इकोसिस्टम को बैलेंस पे ले आओगे, तो बाहर के इकोसिस्टम को भी आप बैलेंस अल्टीमेटली कर लोगे, बिकॉज इट विल बी योर थॉट कि यार मुझे करना है, करना है, करना है. दैट विल बी अ पुश. सो या. Yeah, exactly. Everything starts from within, and once you are Yes. healed, actually you can make the change and all the difference Right. that you want to. जो भी change और जो भी difference हम लाना चाहते हैं वो हम ला सकते हैं. Only if we change or we grow within ourselves. Right. Change is not And the right word. Growth is the right word. and Yes. and there's a saying na, Brahmi, and I believe everybody who is listening to us will relate कि जब आप like there's a saying कि आपका जो बॉडी माइंड एंड सोल होता है ना, दैट इज द टेम्पल एंड यू हैव टू वर्शिप इट. जब आप वो वर्शिप करोगे ना, तो देन वो बैठा है. Absolutely. The alignment that is created, हमारी Yes. mind body, mind body alignment and mind body connection जो होता है वो जब align होता है, जब what to say, एक ही फॉर्म में चल रहा हो, एक ही बैलेंस्ड वे में चल रहा हो, एंड दोनों की जो चॉइसेस, जो सोच है, जो थॉट्स है, फीलिंग्स, इमोशंस है, वो जब एक बेस पे होती है, एक फॉर्मेशन बनता है, ओनली देन वी कैन एक्चुअली बी मोर ओपन टू एक्सपीरियंसेस एंड ग्रो इन ट्रू फॉर्म. Until then all the growth is somewhere pretentious to certain extent because एक से दूसरे की लड़ाई चल रही है.
एंड दोस्ती ही दूर तक जाती है, लड़ाइयाँ बीच में तोड़ देती है रिश्ते. सो it not only goes in life also but with your own body and self as well. हमें खुद से भी दोस्ती बना के रखनी पड़ेगी in order to go far way along, not just leave things at the halfway down there on the way itself. So yeah, with Indeed, this, this reminds me of something which I would really love to mention and state here. He, like you, Brahmi, just a few days before, like you posted something while you were working and you were giving sessions. Okay, so you were looking at the laptop screen and you posted your, like, kept your camera angle of the mobile at one side, right? So it was saying that this is eventually which I wanted to do, but there is more to go. सो exactly. एटलीस्ट वो बात मैं यहाँ पे इसलिए मेंशन करना चाह रहा हूँ क्योंकि जैसे तुमने बोला ना कि खुद का फ्रेंड होना जरूरी है, वो बात है कि अगर आप बिट बाय बिट भी एक स्टेप ले रहे हो ना अपने साथ और अपने लिए, इट इज गोइंग टू इवेंट, वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, राइट? बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, बूंद बूंद से एक कुआं भरता है, वैसा ही है। आप बिट बाय बिट स्टेप भी ले रहे हो ना, इवेंचुअली यू आर गोइंग टू रीच देयर बिकॉज योर अल्टीमेट डायरेक्शन एंड बिगर पर्सपेक्टिव इज दैट। लेकिन इसके Actually, लिए एक स्टेप तो with ले रहे हो आप। with this I will say one thing कि like how rightly you mentioned कि हम अक्सर क्या करते हैं ना, when we think of doing something or taking a step we think यार इससे क्या ही होगा, अगर इतना छोटा सा कर भी लिया तो क्या चेंज आ जाएगा. And you know this हाँ was ये there in the movie also कि क्या ही हो जाएगा वाला scene. A lot of scenes not directly mention of क्या ही हो जाएगा, but कुछ scenes ऐसे थे जो ये बात actually बयां कर रहे थे कि अगर मैं ये कर भी लूंगी तो क्या ही हो जाएगा, what will change. And the aim or the value that we can take from that movie also is कि क्या पता कुछ हो जाए. So बिल्कुल just do it if you feel like it. If you feel like कि ये एक छोटा step भी लग रहा है but it is a step towards growth, ले लो, क्या ही हो राइट, जाएगा ना. Even if you do it, क्या बिल्कुल ही हो जाएगा. Maybe you राइट। might add a new routine to it. Maybe you might end up doing something good out of it. So in spite of thinking कि क्या ही हो जाएगा, let's think कि क्या ही हो जाएगा, कर ही हाँ लेंगे. ये So that's the tonality of it, how it changes our feelings राइट, also. मैं sad होके बोलूंगी I'm very happy, and if I'm happy and I say I am sad, even though I am sad, ये I cannot feel that because my राइट, body is not letting राइट। that feel aligned with my own thoughts and processes. So instead, it will make me happy. So it's the tone through which हम अपनी life को लेके जाते हैं, and we can actually module it in a lot of ways the way we राइट। take it forward. So it is important to take it forward in a way we can make a change. And at the same time adding to the same key, talking to yourself and saying, affirming yourself is very much important, and using the correct tone of audacity, your vocabulary is very much crucial. And at the same time you correctly mentioned, क्या ही हो जाएगा, perception तो आएगा, कुछ ना कुछ तो करेक्ट होगा। एंड एट द सेम टाइम वही आलिया और कायरा ने भी यही किया था मूवी में, जब डॉक्टर जहांगीर का वो देखा था, राइट, कॉन्क्लेव, एंड ही शी जस्ट गॉट इंस्पायर्ड विद वन थिंग, यार मैं तो फ्री हूँ ना, मतलब एक इतने फॉर्मल सेटिंग में बैठा हूँ बट आई एम वेयरिंग अ वॉर्म जीन्स, राइट? बट दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट कि आई एटलीस्ट उस कैरेक्टर ने एक स्टेप लिया टुवर्ड्स हीलिंग एंड टुवर्ड्स वेलबींग एंड हेल्थ, and thereon as shown in the movie at last, वो अपने लिए वोकल हो पाई, अपने लिए Exactly. एक्सप्रेसिव हो पाई, एंड जो Exactly. उसको अल्टीमेट अचीव करना था वो अचीव कर पाई So in true. every So form, true. not only career but in any like self and human relationship, which we are ultimately going to talk about now. Yes, yes, yes. So let's begin with the first Yes, clip. And the first right. clip I would say is about the outburst that happens. The pent up emotions that's there within you, and when it gets out, ki Hmm. suddenly kuch all it is, I guess, something with regards to कुएं में पानी डलता गया डलता गया डलता गया डलता गया, and then finally it is full and अब वो बस बाढ़ आ गई वाला सीन हो जाता है. So the Volcano first, eruption, volcano yes, eruption, actually, volcano eruption is a more apt example, I right? would say. Yes. Yes. So uh, it was like that, I guess. Finally, the volcano eruption happened, and the happened, outburst did take place in the movie as well. So right? let's watch the clip, Let's and watch it all the together. viewers.
Yes. Absolutely. All the viewers can watch and then we can Right. have a little bit of chit chat with it. And our Bilkul. viewers, you can also type in your notions and understanding of it in the Right. comment box as well, in Right. the comment section right down there. So let's not waste some time and let's begin with Let's begin with our first clip. yes, Lights, absolutely. camera, action. Yes, I'll have to play it on here only because I'm not Sure. able to download the whole thing. So let's see. Right. Thank you. Was the clip audible? Yeah, it's audible. Can you make it full screen? It is the If full screen Acha, this actually. is the full screen. Okay, okay. Sure, sure. And कितना you अच्छा can बच्चा था किडो, कभी भी नहीं रोता था। है ना, मतलब स्वीट बच्चा दिन भर मेरे पीछे भागता रहता था, मम्मा मम्मा मम्मा। हाँ, तो रोने से बेहतर तो मम्मा 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 करना बेटर आइडिया था ना। एटलीस्ट जो चाहिए होता था वो मिल तो जाता था। कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ये बच्चे। आई नो। देख तो किडो को, इतनी सी उम्र में कितना कुछ कर रहा है। अभी स्कॉलरशिप भी मिली है उसे हायर डिग्री के लिए। हाँ, फिर किसी बड़ी फर्म में इंटर्नशिप, और वो कंपनी का नाम क्या है बताओ तू। डैड, just stop it now यार। अरे तुम सब सही कर रहे हो। You are doing the correct thing. अरे तू कुछ खा ही नहीं रही है, फिर से डाइटिंग वाइटिंग कर रही है क्या? I don't feel like। थोड़ा तो कुछ खा। ओके, दे दो जो भी देना है। ये ले। याद है चंदा, किडो कितना शांत और सुशील सा था ना, मगर कायरा पटाखा थी। अभी भी वैसी की वैसी है। हाँ, पटाखा करेक्ट कहा, और मेरे साथ तो सबसे ज्यादा गुस्सा, मुंह बनाना, चिढ़ना। तुम बच्चों को जरा सा भी अंदाजा नहीं कितना टफ काम है एक पेरेंट होना। एंड इट्स नेवर एंडिंग। कभी खत्म ही नहीं होता। Once a parent, always a parent. I agree. No छुट्टी। क्यों आशु? All parents should be awarded a Padma Bhushan. हाँ? I love the food. Yeah, nice, thank तो खत्म कर दो ना, just end it। क्या? पेरेंट होने का काम खत्म कर दो ना। बच्चे पालना इतना टफ काम है तो जस्ट एंड इट ना, जस्ट एंड इट। किसने कहा है पेरेंट्स बने रहने को? किसने कहा है? एक तो काम ठीक से शुरू नहीं किया और फिर आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों कंटिन्यू किए जा रहे हो। जस्ट एंड इट, पुट एन एंड टू इट। जब बच्चों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब आप आराम से छोड़ के चले जाते हो और फिर पूरी लाइफ ऐसे कंप्लेन करते रहते हो कि ये मुंह बनाती है, ये करती है, वो करती है। बच्चे पैदा करने का आइडिया किसका था? आपका, करेक्ट? और फिर जो चाहा उनके साथ किया, व्हाटएवर यू वांटेड, ओके? और फिर ब्लेम भी हम पे ही डालते हो। एंड इसलिए टफ है। व्हाट डू यू मीन बाय टफ है मैन? टफ है माय फुट। हाउ कैन यू जस्ट अबैंडन मी? कैसे किया आपने ये? हाँ, कैसे किया आपने ये? मुझे छोड़ के कैसे जा सकते थे आप दोनों? और वापस भी इसलिए लिया क्योंकि मैं सेकंड स्टैंडर्ड में फेल हो गई। यस, आई फेल द सेकंड स्टैंडर्ड। बाप रे, शेम शेम, डम कायरा फेल द सेकंड स्टैंडर्ड। इतनी शर्म की बात थी आपके लिए, हाँ, कि आप ऑल द वे वापस आ गए इंडिया ओनली बिकॉज आई फेल द सेकंड स्टैंडर्ड। और जब मैं फाइनली खुश थी पैपी और नानी के घर में, मुझे वहां से भी ले गए, उनसे दूर कर दिया। यस, पद्म भूषण जस्ट फॉर दैट। और एक पटाखा, एक्चुअली बॉम्ब है मेरे पास। आर यू रेडी? आई हैव बिगन थेरेपी। यस, मैं दिमाग के डॉक्टर के पास जा रही हूँ। तो अगर आप मेरे पीठ पे से मुझे पागल बनाने वाले, just say it to me right now. Sit on my face. Come on, sit. Sit. I'm crazy. Cuckoo. Kaira's gone mad. Mad. यही सोच है ना आप सबकी? मुझे इसी को पागल समझते हो? Yeah. It's a heavy फाइनली one. फाइनली फाइनली वो नेटफ्लिक्स का टुडुम भी आ गया।
Yeah, And I did not expect that coming, but it did. So, and please download Netflix, and it is available at 149 on mobile and we 199 are on other guys. promoting Netflix for free now. Right, right. Yeah. Okay. So this is, I think, to begin with, firstly is about a parent and child relationship and the bonding and the connection and the attachment which they have, right? पेरेंट्स को क्या लगता है ना कि और मैं ना दो काइंड ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट करके बताना चाहूंगा जो हमारे पेरेंट्स है जो हमारे टाइम के पेरेंट्स है राइट आर पेरेंट्स एंड जो करंटली हुआ लाइक बेरिंग चाइल्ड हुआ गेटिंग मैरिड Just 1 minute. I'll add just one thing. Let's not generalize श्योर it because श्योर otherwise it will inculcate all the parents. But let's talk about most or a particular category of parents, which was shown in this particular movie, and many people can relate it. Yeah. Okay. So, like the nature of the parenting shown in this movie of Kyra's parents, they were more of like कि उनको responsibility से भागना था of taking care of their children, and especially at the time जहाँ पे उनके बच्चों को उनकी need थी, especially Kyra needed the closure of their parents and even like to be physically present in around ambience of Kyra, right? Yeah. And like like they went to abroad for like earning money and to like live their livelihood and everything, but at the same time they left Kyra with the grandparents, but then made sure कि ना हमारी एक ऑलरेडी एक बच्ची है या हमारा एक बच्चा है back in India, and they bear the another like child back in foreign country, and especially जो वो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है ना दैट ब्रोक अप Kyra always like with her dadu and with her grandfather always wrote the letters to her mother, especially to her mother. ठीक है एंड देखा जाता है कि daughters are very close to their fathers, but at the same time जो motherly nature होता है जो motherhood होता है ना it is always innately built and acquired from mothers only. So वो mothers का जो वो एक warmth और love था ना because of that thing which she felt at a very young age, उसको वो acceptance, उसको वो acknowledgement, उसको वो warmth उस time पे नहीं attain हुआ. She and this is the one thing very much which she always made a point that irrespective कि उसको कोई response नहीं मिला, वो हमेशा letter लिखती थी अपने मम्मी को. एंड Yeah. जब वो सारी बातें अभी ऑब्वियसली वो एक यंग एज थी एंड देन लाइक द पेरेंट्स केम एज शोन इन दिस मूवी की सेकंड क्लास में लाइक वो अच्छा सा उसने लाइक स्कोर नहीं किया वो फेल हो गई तो पेरेंट्स केम बैक टू टेक विजिलेंट केयर ऑफ देयर like daughter Kyra, and then they separated from the people who were there in the early years of Kyra's life. और देखा जाता है ना तो एक ह्यूमन बीइंग का जो फाउंडेशन होता है ना वो अर्ली इयर्स में लेड हो जाता है और अर्ली इयर्स में जो अटैचमेंट होता है ना और जिन लोगों के साथ होता है उनके साथ लाइफ लॉन्ग रहता है वो इम्पैक्ट करता है उनका कैरेक्टर और मे बी बिल्डअप ऑफ लाइक द होल पर्सोना ऑफ दैट पर्सन जब वो अडल्ट बनते हैं तो कायरा का वो पर्सोना हुआ जो उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से अटेन किया उसके खुद के पेरेंट्स आ गए उसको सपोर्ट करने के लिए बट वो जो एक लाइक उनको ग्रैंड पेरेंट्स से अपने घर पे लिया है ना तो वो अटैचमेंट ब्रेक हो गया वहां पे भी तो ऑल द टाइम लाइक इट वाज अ फ्लक्चुएट थिंग कि बचपन के कुछ साल ठीक है उसने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहे तो अपने पेरेंट्स से अटैचमेंट ब्रेक हो गया और जब वापस से पेरेंट्स आ गए तो ग्रैंड पेरेंट्स से वो अटैचमेंट ब्रेक कर दिया राइट that So, was the thing which built up as an adult and Kyra wo worst up कर रही है and when like the parents and their like friends are talking about like fellow parents कि parenting is very hard and ये lifelong journey है like there should be this thing कि parenting lifelong journey है लेकिन उससे भी पहले आपको एक mind makeup करना है that are you ready to bear a child, are you able to, are you like ready to take the responsibility of your child, right? Where irrespective की आपकी कंडीशन कैसी है आपकी आर्थिक कंडीशन कैसी है आपकी इमोशनल कंडीशन कैसी है because two people are going to include third life
right, in their journey. And that is a big thing in itself, because it's a human being after all, and human beings are made up of emotions, thoughts. तो आपको खुद को संभालना ही है, बट अपने बच्चों को भी संभालना है। तो वो कहना कि वो स्टार्टिंग बिल्डअप ईयर्स में वो उसके पेरेंट्स नहीं कर पाए, बिकॉज ऑफ विच आज के टाइम में जो इस सीन में दिखाया गया, जब आज वो अपनी लाइफ जी रही है अपने टर्म्स कंडीशंस पे, एंड शी इज बैक इन हर ओन होम, तो वो कंपैरिजन किया जा रहा है कि तुम्हारी पेरेंटिंग ऐसी है, मेरी पेरेंटिंग ऐसी है, एंड ये एंड दैट टू विथ हर ओन ब्रदर, हर ओन सिबलिंग। कहते हैं सिबलिंग राइवलरीज होती है। सिबलिंग राइवलरीज एक सेइंग है जो एक लाइक कहीं से उठ गई है, लेकिन उससे भी पहले सिबलिंग वार्मथ होता है, सिबलिंग कनेक्ट होता है। एंड वही एट द एंड ऑफ द सीन देखा भी गया कि लाइक जो उसका ब्रदर है, उसने एक इमोशनल इंसाइट दिखाया। जब कायरा रूम छोड़ के गई तो वो उसके पीछे पीछे गया, कोई नहीं गया, सिर्फ वही गया। Absolutely. See, I will share certain insights that I had. Now, ये particular एक scene में बहुत सारे factors discuss हो चुके हैं. Like, how parental criticisms या, social criticisms affect you as a child. Right. First, second, when that pent up emotions इतने heavy हो जाते हैं, तो किस तरह से वो बाहर आते हैं. Third, the societal expectations जिसमें आपको रख दिया जाता है. Lastly, it is also how therapy is being treated in and around the world even till date. Now हम एक के बारे में थोड़ा सा discuss करती हूँ, just in a few lines. Now, criticisms are very, मतलब एक ऐसा टर्म है जिसको हम बहुत एक्सेस या एक लेवल तक अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, बट दैट क्रिटिसिज्म कैन एक्चुअली वर्क इन वेरी लिटिल कि यार तेरे से नहीं हुआ क्या. Even this sentence is so much of an impact that creates in that kid's heart and mind. Like when it was said, right, कि वो second standard में fail हो गई, इस वजह से उसको लेकर आ गए. That created an impact. That somewhere was there, उसके अंदर वो चीज लग गई, because that acted as a criticism in there. भले ही उसको कहा नहीं है, उसको लेके नहीं आया, बट उसकी एक सेफ स्पेस से, जो स्पेस उसको सेफ लगने लगा था, उस स्पेस से उसको निकाल दिया गया. So that safe space, that happy space suddenly got vanished for her, which in return had an impact which was pretty negative in nature. Again, जब पेरेंट्स सब बैठ के इस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे थे कि पेरेंटिंग कितना टफ काम है, ये होता है, वो होता है, all of these discussions, I'm not saying parenting cannot be tough. It can be tough. At times it might happen that you are not able to deal with that pressure also. But it is not a fact that you mention in front of your kids and in front of your people, like your बच्चों के सामने ये बातें नहीं होनी चाहिए. These things should be dealt in private, where you Right. are there, you are alone, because this has an impact that gets created, and it has a very, very huge impact on the people's heart, on the kids' heart. So it should be done very carefully in nature. Second thing is, ये जो criticisms है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा तो फर्क नहीं लाते हैं, but when it gets to a larger extent, वो थोड़ा करके, I just have an example. अगर इसमें चौकोस रखे हुए हैं, one chocos, maybe 8 chocos उतना नहीं fill करेगा, but then another day another chocos, and then I keep on filling the like this particular container with chocos and chocos and chocos and chocos. One day it will full, right? And the next day, अगर मैं भरती जाऊंगी, one will fall off. And this is something like you can relate it with volcano eruption as well. जब हम बहुत ज़्यादा input कर देते हैं, तो it will blast. And similarly, that burst happened, which was very evident. Now, it is not just with how the society is treating you, but how you are dealing with it also. Like if you are gradually letting off that grudges or the pain or the anger from within you, वो container पूरा भर ही नहीं पाएगा. You will be able to let off those extra emotions, but if you do not let it subside a bit by bit, it will fill and it will have that eruption. So that burst was as a result, in a result कि लोगों ने उसने इतना रखी अपने अंदर throughout the time and throughout the period that it got a lot, and now she could not keep it inside of her, so it got all out. That sudden burst created
an outburst for her emotions and for the family's emotions also in account to that. Like everyone was like everyone got surprised in what happened. That was a whole negative scenario, which is a reflection कि जब हम अपना expression कर रहे हैं, we are expressing our emotions. It is important to let things go easy. Like if I felt something bad today, I have to let it out today also. So this is a learning for all the people who are watching us and will be watching us is that whenever you are going through certain things, it is important to let go of some too. Gradually felt something today, Right. communicate, बात करो जाके. Yeah. Once you talk about it, आप बात करोगे, maybe the solution would not come, but the discussion will happen. Solution नहीं मिलेगा, उसका समाधान नहीं होगा, but उस पे चर्चा तो होगी, उस पे discussion तो होगा, and क्या पता उस चर्चा से something you get back. Now that burst, and then there was a sentence. How could you just abandon me? Now, Hmm. when you express a lot, आप continuously express करते रहोगे, आप जब अपना वो होता है ना भरा हुआ दिल खाली कर रहे होते हो, तो जो deep down जो factor आपके दिल में चुभ रहा होता है वो बाहर आ जाता है. And that was the factor that came out gradually. Obviously, with the right guidance of therapy also. I'm not denying the fact that therapy did not play a role. Therapy did play a role and a very effective role in it. However, बात करते करते जब आप बोलने लगते हो, जब आप अपने बारे में बात करने लगते हो, अपने फीलिंग्स के बारे में बात करने लगते हो, ऑटोमेटिकली वो जो डीप डाउन इमोशंस होते हैं वो निकल जाते हैं. एंड दैट केम आउट in case of Kyra also, Alia also, like how could you just abandon me? And then she talked about the actual part which was hurting her कि पहले आप मेरे को abandon कर दिया, फिर जब मैं खुश होने लगी तो आपने फिर मेरे को वहां से छीन लिया. All of this happened. Next was how therapy was treated as a bomb and a pataka, such heavy words for therapy and such heavy words in negative intonations. कि हम किस तरीके से थेरेपी को आज भी बहुत जगह पे, not all but बहुत सी जगह पे थेरेपी को एक नेगेटिव नोशन से देखा जाता है, which is still lying. आज भी अगर जाके कोई बोलता है कि आई हैव टू गो टू अ काउंसलर, या मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रही हूँ, या मैं थेरेपिस्ट के पास जा रही हूँ, या मैं साइकाइट्रिस्ट को दिखा के आ रही हूँ या आ रहा हूँ, देयर इज लाइक तेरे को क्या हो गया, तू पागल है क्या? That is the first thing that comes up. So still it is like with the pataka and bomb, it was a way to analyze it, how stigmatized till date society is. Although this movie was a lot before, like was made a lot before, but A आज भी decade कई before. ऐसे हाँ, right. आज भी उसका इम्पैक्ट है उतना ही है सोसाइटी पे. कहीं बहुत अनफॉर्चुनेट. जगह ऐसी है, बहुत जगह ऐसी है जहाँ ये चीजें आज भी वैसी ही है. And then lastly, when you like last was this only when you mentioned that parenting के लिए आप ready हो कि नहीं. Along with that, one thing to know is also this कि there would be times when you will get tired, because parenting is not an easy responsibility that you just take on. There will be ups and downs. There will be like you will feel exhausted. You will be like क्या कर रहा है सामने वाला, मतलब मेरा बच्चा या मेरा बच्ची whatsoever, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. That phase Right. will come. All our Yes. parents have faced that, and probably बिल्कुल. when we reach that stage, we will also face this stage. But it is important to know that if you have made up your mind, you will go through that phase, you will pass that phase. वो होता है ना कि टनल तक चलना पड़ेगा, and you will see that light. You will see how all of it is worth it once you go to that phase, once you realize it. And when you are going through that phase where you are tired, look for why you started and how it felt when you first took your child in your arms. And you might as well realize the change, the shift of emotions instantly. जब हम अपनी अच्छी मेमोरीज को याद कर लेते हैं ना अपने बुरे टाइम में, ऑफन हमारी अच्छी मेमोरीज उन बुरे मेमोरीज पे ओवरपावर कर ही जाती है. इट्स जस्ट इम्पोर्टेंट टू लुक एट द राइट स्पेस एट द राइट टाइम. एग्जैक्टली. एंड इसी में जस्ट दो थिंग मेरे को जो क्लिक किया वो मैं ऐड ऑन यहाँ पे करता हूँ कि यू करेक्टली मेंशन. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल थेरेपी का क्या इम्पोर्टेंस रहा, एंड बिकॉज ऑफ शी टेकिंग अप थेरेपी एंड सेशंस कंटिन्यूसली एंड कंसिस्टेंटली, वो एक रीजन था कि वो एक्चुअली ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स है, उसका भाई है, ठीक है, कैरेक्टर का, कायरा का, दैट इज वन थिंग. बट जनरली ऐसी जब
सेंसिटिव बातें होती है, वो भी घर के किसी मेंबर के बारे में या घर से रिलेटेड बातें होती है ना, आज भी लोग झिझकते हैं, चाहे कितने भी क्लोज का कोई नेबर हो, ठीक है, जान पहचान के लोग हो या रिलेटिव ही क्यों ना हो, या फॉर दैट मैटर ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि उस पेरेंट्स के बाद ग्रैंड पेरेंट्स ही होते हैं, उनके सामने भी बोलने में और एक्सप्रेस करने में झिझकते हैं। बट एक थिंग मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि वो कंसिस्टेंट रही ना सेशंस में डॉक्टर जहांगीर के, शाहरुख खान। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो इस डिनर गेट टुगेदर में लाइक वो एक्सप्रेस कर पाई, वो वोकल कर पाई अपने अंदर के इमोशंस को, राइट। उसने उसने ये नहीं सोचा कि यहाँ पे कौन बैठा है और कौन नहीं बैठा है। इट वाज इट वाज कि वो थेरेपी और काउंसलिंग सेशन ने उसको एम्पावर किया टू स्टैंड अप फॉर हर ओन सेल्फ। तो जिस तरह से आई एग्री, जिस तरह से थेरेपी और जिस तरह से काउंसलिंग को दिखाया गया, ये पटाखा फोड़ती हूँ, एक धमाका करती हूँ, राइट। ऑब्वियसली एक नेगेटिव नोशन है कि आज भी एक स्टिग्मा की तरह देखा जाता है हमारी सोसाइटी में, टैबू की तरह देखा जाता है, एंड हाउ पीपल परसीव इट, पीपल लुक इट, वेदर यू गो टू अ साइकियाट्रिस्ट और एनी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। बट एट द सेम टाइम आपको एक पॉजिटिव साइड भी दिखेगा। उसने वो नोशन इसकी, जिस तरह से उसके पेरेंट्स ने उनके उस लाइक एंटिटी, उस कैरेक्टर, उस बच्ची के साथ बिहेव किया रहे, एंड वो एक अटैचमेंट बनाया फ्रॉम द चाइल्डहुड। तो कीपिंग दैट इन थॉट एंड देन रिलेटिंग इट विद द थेरेपी एंड काउंसलिंग की इनको शायद वो भी नहीं पता कि कैसे पेरेंटिंग होती है, तो यार इनको थेरेपी और काउंसलिंग के बारे में कैसे पता होगा। दैट वाज द रीजन कि वो जिस तरह से वो एक राइटर और उसने वो लाइन लिखी ना कि पटाखा फोड़ती है, ठीक है, gone mad, cuckoo gone crazy, right? And going to therapy, I have begun therapy. That was the notion behind saying this way, and that got empowered at the same time, which empowered her to say this was this therapy and counseling sessions, that too on a consistent basis. तो यहाँ पे जब आप अगर you are feeling something not happening according to your say and thought process, right, and you are going for therapy or you are going for counseling, तो यहाँ पे मैं ये इस पे फोकस और हाईलाइट करके बोलना चाहूंगा, कृपया पेशेंस रखिए, ठीक है, टाइम दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, और वो जो थेरेपी का जो इम्पैक्ट है ना उसको भी टाइम दीजिए। इज गोइंग टू टेक टाइम। ऐसा चुटकी बजा के कोई असर नहीं दिखेगा। आप मेडिकेशन भी लेते हो, तो गोली लेते हो, आप आराम करते हो, देन यू सी द रिजल्ट, राइट। वैसा ही थेरेपी और काउंसलिंग भी होता है, जो आपको बताया जाता है ना बाय बाय अस एंड बाय मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एंड साइकोथेरेपिस्ट, वो आप करिए, आप कंसिस्टेंट भी रहिए, तो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। लेकिन जैसा थेरेपिस्ट आपके साथ है ना बना हुआ, आपको भी एज अ क्लाइंट वो कंटिन्यू रखना पड़े, जो यहाँ पे कायरा ने डॉक्टर जहांगीर के साथ रखा, आलिया ने शाहरुख खान के साथ रखा, बिकॉज ऑफ विच इट इवेंचुअली हैपेंड। सो या Yeah, absolutely. And I guess, today we have reached the time limit as well. It's just 10 minutes that is left. So let's just end it with a quick, small, short clip of this particular movie again. And then we can end the session with it. This particular clip is all about, how mental health professional works for the welfare of their clients, their people. Okay, राइट, so this is a small clip onto हाँ, that, on what we do actually and not what we are told that we do. Yes, okay, let's see. यस, एंड ये उसी को हाईलाइट करते हुए, राइट। Absolutely. ओके, थोड़ा हेवी हो गया। Okay. जिंदगी एक जिगसॉ पजल की तरह है, वो पजल जब हम बचपन में खेलते थे, तो मेरे जैसे लोग उस पजल के खोए हुए टुकड़े, पीसेस, सिर्फ ढूंढने और जोड़ने में मदद कर सकते हैं। But only you can complete the puzzle. We are all our own teachers. So this very First of all, nicely clap. addresses A big applause to exactly. a big applause to Shahrukh for saying this, Yeah, right? कि ना exactly. This ये जो स्पेशली लाइन है ना कि जिंदगी एक पजल की तरह होती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बैठे हैं, आपको वो रास्ता तो दिखा देंगे,
कि यार ये पजल वाला ये यहाँ पे रखना है, ये यहाँ पे रखना है, लेकिन एट द एंड क्या पिक्चर जो सामने क्लाइंट बैठा है या बैठी है उसको क्या पिक्चर बनाना है वो उसके हाथों में, ठीक है। सेम वे हम लाइट शो कर देंगे हमारे क्लाइंट्स को, हम पाथ भी दिखा देंगे, हम खड़ा भी कर देंगे। कहते ना कि घोड़े पानी के पास शोर पे ले आना, लेकिन घोड़ा खुद ही जैसे ही ये सेम चीज है, हम वहां तक आपको ले जाएंगे, आपका हाथ पकड़ेंगे, लेकिन आपको चलना है, आप हम जो बताएंगे वैसे ही चलना है, चलना आपको ही है, कदम आपको ही रखने हैं, एफर्ट्स आपको ही दिखाने हैं। Exactly. हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, पॉसिबल क्यूज बता सकते हैं, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, या फिर आपको खुद से मिला सकते हैं, बट कैसे पूरा करना है ये आप ही को देखना है. That is something that we believe in. And yeah, with this, we can end our life for the day. And it was a pleasure having you with in the session and have a very good discussion on this. We will have our upcoming lives very soon. We will come up with some interesting topics to have a discussion on, and we will see you again on Wednesday with another interesting topic and live there. That is it. With this, we can end our live session today. Yes, and this time is going to be this another live which we are coming up is going to be with exciting techniques and exercise जो आप अपने लाइफ में खुद भी implement कर सकते हो, and obviously अगर you have a therapist or a psychologist there with you along your journey, so obviously आप उनसे भी consult करके you can carry forward with all these techniques. So it's going to be very exciting, it's going to be very playful at the same time, एंड एंगेजमेंट और इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा, हम जो करेंगे आपको भी करवाएंगे. So yeah, stay tuned with us, stay tuned with Insighted, stay tuned with Mental Health Spot 20. And अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आप you want some movie to be analyzed upon by us, or you want any topic to be represented and talked and like highlighted by us, by both of us, psychologist Brahmi and psychologist Utkarsh, so please DM us, approach us, and हम बहुत सारे एक्साइटिंग चीजें नई नई चीजें इंकलकेट कर रहे हैं अपने एंड अपने पॉडकास्ट में. सो हाँ, लाइक सपोर्ट अस, शो एंड एट द सेम टाइम शेयर विद पीपल, विद योर लव्ड वंस, एंड यू नेवर नो, कोई भी एक बात किसी को भी इम्पैक्ट पहुंचाएगी, आपको तो पहुंचा ही रही है, बट यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ड्यूटी एज अ ह्यूमन बीइंग, यू हैव टू मेक एंड शो दैट इम्पैक्ट फॉर योर ओन ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो, जो हम अपने प्रोफेशनली सेटअप में तो कर ही रहे हैं, बट आप एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग भी कर सकते. सो या, thank you so much. Absolutely, absolutely. Thank you so much, and that is it. With this, we can end our live for the day. Thank you for being here, and we will see you in our next streams. Right. So stay tuned and follow us for more updates. Bye bye, take care, and this is Right. us signing off. Take care, everyone. Hasta la vista.